and the probe into this matter. Meanwhile, we're shifting our focus to the national capital, where every morning we see scenes of the Delhi being shrouded by a thick layer of smog. Yes, viewers, Delhi walas have been choking on toxic fumes for weeks at end. And it is without a shadow of doubt that the primary cause of this is the stubble burning that is taking place in the neighbouring states of Punjab and Haryana. Now, this is not a new phenomenon. We've seen this take place last year and the year before that and the year before that as well. As Delhi walas continue to choke on toxic fumes, we know that the elections to the Vidhan Sabha are on the anvil. Now, even so, politicians continue to bicker and continue to point score while the people of Delhi continue to suffer. So, of course, the larger question with regards to this is whether the deteriorating air quality will be a major voting issue for the Vidhan Sabha polls. Meanwhile, I'll take you viewers through the fresh AQI statistics, real-time AQI statistics. I have them open on my screens over here. I request the crew upstairs to showcase it to our viewers right there. If we can get the numbers big as well, as you can see in the national capital in particular, a lot of the areas are either red or purple, indicating the severity of the AQI in this region. In particular, in Indrapuram in Ghaziabad, it's at 164. That is unhealthy. In ITI, Shadra and Jilmil industrial area of Delhi, it is 279, very, very unhealthy. Meanwhile, in Mundaka in Delhi, it is 226. In Sonita Vihar, a water treatment plant, it is 236. At the Major Dhyan Chand National Stadium, it's 227. Meanwhile, at PDGV college near Srinivaspuri, it is 232 at this point. The National Institute of Malaria Research near Sector 8 in Dwarka, the AQI is 205. Meanwhile, more information, Punjabi Bagh, the AQI is 214. That is very unhealthy. These are, of course, some of the statistics. RK Puram as well, 231 is the AQI that has been recorded in, of course, the Jawaharlal Nehru Stadium. The AQI is 185, and in Noida, the AQI is currently at 161. These are, of course, the latest statistics that we are tracking for all our viewers. Meanwhile, a host of my colleagues are joining us on the broadcast. My colleague Simran Babbar joins us live from Akshardham, Arzu Seth joins us live from ITO, and Mahindra Mahi is joining us live from Noida. Let's hop across first to Arzu. Arzu, you've been speaking to us every single morning, tracking what exactly is occurring on the ground. You've been speaking to people around the ground as well. What do they have to say? Is the pollution that continues to mount, the deteriorating air quality, a voting issue for them? The air quality continuously deteriorating, and today also the AQI is in the poor category. Right now I am at the ITO and would like to show you the visuals from the particular place, and you can see, you know, this is the ITO, and where you can see the visibility has become very less. The thick layer of smog has engulfed the very national capital. The buildings nearby are not that visible. Also, when we talk to the people, they have in fact told us that there are a lot of problems that they are facing right now. Also, I have with me some school-going students, you know, those who also suffers every day when they go to the schools, and what problem do they face? We'll talk to them. What's your name? Krish Khanna. Krish, क्या प्रॉब्लम होती है डेली आप लोग जब स्कूल जाते हो? क्या कुछ प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसके कारण कितने एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, आइज़ रेड पड़ जाती हैं, आई से पानी निकलता है, और कितनी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। और मैं ये सरकार से दुआ करना चाहूँगा कि वो मतलब क्या करना चाह रही हैं। पहले वो कह रही थी
कि पंजाब में जब हमारी सीटें मिल जाएंगी, हम बन जाएंगे, तब हम वहाँ पर रैली नहीं जलने देंगे। अब पंजाब में वो बन गए हैं, तब भी यहाँ पॉल्यूशन कम नहीं है। एक हमारा फेस्टिवल होता है हिंदुओं का, दिवाली, हम वो दिवाली भी बना नहीं सकते। अब हम मतलब क्या करें? ये दिवाली में इतना वो कहते हैं खाली दिवाली वाले दिन ही पॉल्यूशन हो रहा है, इतना पॉल्यूशन है, आप उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं आगे करके? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेना बहुत बड़ी बात होती है। वो अपने एक एक पैसे करके जोड़ के वो लेते हैं कि कम से कम वो चला पाएँ। पर दिल्ली में वो भी 15 साल से ऊपर वो चलाने नहीं दे रहे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन चीज़ों से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कोई इन चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो बहुत चीज़ों में सुधार भी आएगा। पर वो जब करना ही नहीं चाह रहे, कोई सरकार इस पे देख ही नहीं रही, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। अभी अक्टूबर का महीना है, इतना पॉल्यूशन है, कल को नवंबर दिसंबर में तो इतना होगा कि कल को दिखेगा भी नहीं कोई। यही तो वजह है कि रातों को दिन में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। These are the voices from the ground. You can listen them, and this is not the one person telling us. This is the people of Delhi that are asking the government that what have they done that we are facing right now such situation that it is impossible to breathe in such air. आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? केशव ब्रह्मी। केशव, क्या प्रॉब्लम होती है जब आप लोग स्कूल जाते हो सुबह सुबह? क्या ब्रीदिंग में भी इशू होता है जब यस, मास्क पहनना पड़ता है कभी कभार हमें, और जब हम घर से निकल रहे होते तो बस दूर से दिखती नहीं है कि आ रही है नहीं आ रही। और बस ड्राइवर्स भी कहते हैं, जैसे कैब ड्राइवर्स कहते हैं कि उन्हें चलाने में दिक्कत हो रही है। कैब वगैरह सुबह के टाइम नहीं हो पाती है ज़्यादातर। तो आपको लग रहा है कि उतना अटेम्प्ट सरकार नहीं करी है जो काम उनको करना चाहिए, जिस वजह से ये हालात हो रहे हैं? हाँ जी, देख के तो यही लगता है कि सरकार नहीं कर रही है, बस पटाखे ही बैन हो जाते हैं हर साल, और उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं पाता है। So majorly, you know, these youngsters have more craze about the firecrackers, and that's why they are speaking about it, because Diwali is just around the corner. Today is Dussehra, and after one day there will be a celebration of Diwali, and that's why they are saying that, you know, the government ban the firecrackers. But after that we see, you know, the pollution has been there in the you know, in the national capital since several days, and why the government is not taking the long term initiative to tackle with it. सर, हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन पे। लगातार राजधानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले मैडम। दिल्ली के रहने वाले, किस तरीके से दिक्कत हो रही है? दिक्कत, आंखों में परेशानी है, गले में दर्द रहता, सीने में दर्द रहता, सांस लेने में परेशानियां रहती है हमारे में। चुनाव भी करीब है, तमाम दावे किए जाते हैं, चाहे प्रदूषण को लेकर हो, पानी की समस्या हो। लग रहा है चुनावों में प्रदूषण एक बड़ा, आप लोग उसको सोच के ही इस बार वोट करेंगे प्रदूषण के? हाँ, सही बात है मैडम, ये ध्यान रखेंगे प्रदूषण के बारे में भी कहेंगे। पानी गंदा आ रहा है, कोई भी सारी परेशानी दिल्ली में ही आ रखी है जितनी भी है। सुबह हम काम के लिए निकलते हैं तो ड्यूटी पे आंखों में दर्द रहता, सीने में दर्द रहता हमारे। So, Priya, of course, the people are telling their problems. They are telling that, you know, they have the problem while breathing. They have a lot of problem. They face itchiness in their eyes. So these are the voices of the national people of the national capital. Those who are telling their problems, and also asking the government, urging the government to take the steps that could lead to the, you know, improvement in the air quality in the national capital. Yes. Indeed, let's also hop across to Akshardham, where my colleague Simran Babbar is standing by. We've heard it from people near the ITO as well. What's the situation like near Akshardham? I can see a layer of smog right behind you. What do the people have to say? Do they think this is a major voting issue for them? Well, absolutely, Pia, as we are in fact looking at various scenes from across Delhi, and this is one such place where in fact the entry into the national capital across the NCR region happens. And as I can show you, there is traffic movement that is going on in the national capital. From here the traffic has only been increasing at this point. But if I have to tell you about the kind of situation that maintains at this very point at Akshardham, where AQI is often in fact increasing, as many stations which are across 37 stations across the national capital, and they report the higher levels of you know, AQI day by day. And in fact the studies have been also showing that ahead of Diwali, the AQI will now be stepping into the severe category, reaching in fact at
300 and crossing the mark of 300 at most of the places in the national capital. What I can tell you from here, from being here at this point in Akshardham, is that it is in fact becoming as difficult as one can imagine into a suffocated gas chamber to even begin with. There are people around, but these are office goers who are in fact right now in a rush point to reach to their particular destinations due to the morning hour. There is metro inside as well. But you know, at this point of time, as if we go by the guidelines of the AQI which is presently as the average in Delhi is 204, which is 9.8 times beyond the permissible limit of the WHO. In fact, this is the very important point to note, that in Delhi, the kind of air that we are breathing, it is 9.8, which is nearly 10 times worse than what the WHO in fact recommends for healthy breathing. And this is not 1 year scenario. This in fact, as you have mentioned, is a every year scenario that we have been witnessing. But at this present time, what we are expecting from this point is the CAQM to take stringent and effective measures. On Friday, the Commission for Air Quality Management took this meeting with the concerned departments, including the state governments and also the implementing authorities for taking continuous action on the stubble burning, and also for the authorities to issue the challans for the vehicular emissions. What have people been telling you? You've been speaking to people on the ground as well. What have they been telling you with regards to the pollution that continues to deteriorate? As you rightly mentioned, this takes place year after year. We saw similar scenes last year in the capital as well, the year before that, and it just seems to be getting worse. The situation does not seem to be improving. This time around, there are elections that are on the anvil. So is this a major voting issue for the people? Well, absolutely, Pia. You have actually struck the right chord, and at this point of time, you know, the people, when we spoke to them, in fact, yesterday as well, and this morning too, when we got a hold of them, is that they are in fact in the similar boat as that of a patient with respiratory diseases. And this is when, in fact, where the entire issue begins. Right now, everybody, whether it's you, me, or the normal people who are going to vote for the Delhi Assembly elections, are facing some or the other kind of an issue in breathing or irritation in eyes, or in fact skin diseases, which they are actually having to deal with on an everyday basis. Because when you go out and expose yourself into this kind of an air, which is in fact very equivalent to what is there in a toxic gas chamber, you definitely cannot be spared. And this is what exactly also is in the minds of people, given that Delhi elections are just around the corner. They are in fact saying that if the governments are failing to in fact ensure their implementation into the measures that should be enforced in curbing the pollution, then this is going to be a bigger issue also ahead of the polls this season. And as I speak to you, in fact, the throat in fact also aches at this point. And this is one of the stations in Delhi which is in fact not as severely as affected as other stations. Imagine if this is scenario right now, what is the situation at Akshardham, where the AQI is almost reaching 350. This is in fact very serious, and the governments at this point of time are only passing the buck on each other. Pia. Indeed, and let's also hop across to Noida, where my colleague Mahendra Mahi is also joining us. Of course, it's not just the national capital that has been adversely impacted. Adjoining areas including Ghaziabad, Gurugram, Faridabad and Noida specifically are also reeling under continuously deteriorating air quality index. Mahendra, what is the situation like in Noida? What sort of precautions have and what sort of advice has the local authorities over there issued for the people living in Noida? We see a lot of commuters in particular who use the DND to traverse between Delhi and Noida. And what is interesting is that if one looks while going from Noida to Delhi, one cannot see the Kalindi Kunj barrage that is located just a few kilometers away on the Yamuna river. That's how bad the situation is today. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दिल्ली और एनसीआर की हवा के साथ जो यमुना है वो भी बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, क्योंकि
देख रहे हैं हम किस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार, चाहे नोएडा की बात करें या पूरे एनसीआर की बात करें, यहाँ की जो हवा है बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। और जो सरकारें हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, केवल पॉलिटिक्स करती है। और इसके चक्कर में जो दिल्ली और एनसीआर की जो लोग हैं वो केवल जहरीली हवा इनहेल कर रहे हैं। और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अक्टूबर महीने से ही जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शुरुआत इसकी 150 से होती है, यानी कि जब AQI 150 होती है उसके बाद से लगातार हर सप्ताह जो AQI का लेवल है बढ़ता जाता है। अगर आज की बात करें तो देखिए आज थोड़ी हवा में सुधार है, यानी कि आज जो थोड़े हालात हैं उसमें थोड़े कहीं ना कहीं सुधार है। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो AQI है वो 260 दर्ज किया गया है। अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से 320 पहुंच गया था, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां AQI 350 पहुंच गया था, मगर आज राहत है क्योंकि ये भी मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 2 दिनों के बाद जो पॉल्यूशन है वो 400 के पार पहुंच जाएगा, यानी कि जो हालात हैं बिल्कुल इमरजेंसी जैसे हो जाएंगे। और भैया देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं किस तरीके से कि दर साल लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और हर बार जो सरकारें हैं सारा ठीकरा ये तो पराली पे फोड़ देती हैं, एक दूसरे के सरकारों पे फोड़ देती है। पहले जो दिल्ली सरकार थी वो पंजाब पे आरोप लगाती थी कि पंजाब के जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, जिसके वजह से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो दूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है, और वहां की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। मगर फिलहाल में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मगर सबसे बड़ा जो रीजन है दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का वह है सुस्त रवैया जो अधिकारी हैं, जो केवल अक्टूबर, नवंबर, सितंबर के महीने में काम करते हैं पॉल्यूशन को लेकर। क्योंकि हमने ये भी तस्वीर देखी यमुना घाट किस तरीके से जहरीली हो चुकी है। सफेद की जो मोटी जो जहर की परत होती है वो यमुना में एक तरीके से चारों तरफ ढक चुकी है। सोचिए आने वाले समय में छठ पूजा भी है, जो लोग होते हैं आस्था की डुबकी उसी जहरीले पानी में लगाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने यमुना घाट में डुबकी लगाई थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि ये लोग हैं बड़े लोग, इन पे लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। सोचिए आम जनता अगर बीमार पड़ेगी तो उन पे क्या कोई ऑप्शन होगा। और सबसे अगर यहाँ हैरान करने वाली बात है, ये सबको पता है, चाहे सरकारों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, संबंधित विभाग की बात करें, सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में सितंबर अगस्त के बाद से ही पॉल्यूशन का लेवल है बढ़ने लगता है और जो तमाम पाबंदियां वो लगाई जाती है। तो क्यों ना ये जो काम है ये पूरे साल किया जाए, 365 काम किया जाए, क्योंकि खासकर नोएडा एनसीआर में 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता है, 24 घंटे वाहन चलते हैं। एक तरीके से ये जो शहर है ये रुकता नहीं है। तो ऐसे में तो जो तमाम पाबंदियां हैं जो केवल 1 महीने के लिए लगाई जाती है, इसको पूरे साल लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करें, नोएडा की बात करें, तो यहाँ 24 घंटे बड़े बड़े सोसाइटियों में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो उसको रोकने के लिए कोई उपाय परमानेंट नहीं किया जाता। केवल जो कुछ अधिकारी है 5-10 लाख का चालान काट देते हैं, उसके बाद अपने दफ्तर बैठते हैं और अखबारों में हेडलाइन छपा देते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग ने कार्रवाई की। मगर सबसे बड़ी बात है, असल में इस पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो बुजुर्ग लोग जो घर में रहते हैं, जो सुबह शाम अगर बाहर निकलते हैं, जिनको अस्थमा की दिक्कत है, जिनकी आंखों में जलन होती है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की बीमारी है, और वो तमाम जो प्रेग्नेंट महिला है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। डॉक्टरों से हमने बातचीत की तो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना, देखिए ये जो जहरीली हवा सीधा आपके फेफड़ों पे असर करती है, सीधा जो आपके इंस्टेंट जो पार्ट्स, जो बॉडी का इंटरनली पार्ट है उसको सीधा असर करती है। और एक सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उनकी जो आयु है 10 साल अपने आप कम हो जाती है, इतनी जहरीली हवा वो इनहेल करते हैं। यानी कि अगर कोई लखनऊ रहता है और उसकी वो 90 साल जी रहा, तो अगर वो आके नोएडा, दिल्ली एनसीआर के किसी भी इलाके में रहे तो उसकी जो उम्र है वो 10 साल अपने आप कम हो जाएगी। तो सोचिए इतनी जहरीली हवा हम जो लोग हैं इनहेल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देखिए लगातार पिछले कई सालों से जो NewsX से लगातार तमाम रिपोर्टिंग दिखाता, तमाम समस्याओं को दिखाता, तमाम चीजों को बताता है कि इसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई इस पे एक ठोस कदम नहीं उठाता। सुप्रीम कोर्ट भी केवल We've just been seeing a politician's point score, and as you aptly pointed out, the citizens of the national capital are reeling under a double whammy, because it's not just the air, it's also the water in Yamuna, particularly near Kalindi Kunj barrage, that is covered with toxic froth as well. I'd like to thank all my colleagues Mahinder, Arzu and Simran for joining us live on the broadcast, of course taking you viewers through what's the situation like on the ground in the national capital. Here is of course to hoping that our leaders all join together and take a step towards mitigating this problem. Catch you all after a quick short break.